Hi everyone, this is Dr. Mrinalini Sharma, and in today's YouTube live session, we're going to be talking about my favorite surgery, rhinoplasty, and इसके बारे में जो सबसे commonly मुझसे सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में हम आज discussion करेंगे. So, rhinoplasty or nose job is a very popular surgery these days, and जब भी कोई patient मुझसे rhinoplasty के बारे में पूछता है, the one of the questions the patient wants to know is whether this surgery के जो results हैं वो permanent है कि नहीं. So basically rhinoplasty involves changes in the shape of the nose. तो अब बहुत सारे concerns लेके patients मेरे पास आते हैं कि उनकी नाक या तो बहुत मोटी लगती है या उनको लगता है कि जो आपके nostrils है वो बहुत बड़े हैं या फिर नाक जो है वो बहुत फैली हुई है या यहाँ की bones जो हैं बहुत फैली हुई है. These are the most common concerns जिसकी वजह से पेशेंट राइनोप्लास्टी कराना चाहता है या कुछ लोगों की यहाँ की हड्डी बड़ी हुई होती है जिसे हम मेडिकल टर्म्स में नेजल हम कहते हैं. सो ऑब्वियसली इट्स अ सर्जरी एंड सर्जरी का डर सबके दिमाग में होता है. सो जाहिर सी बात है कि एक कंसर्न जो पेशेंट का होता है वो ये है कि हम सर्जरी कराएं, हम ये सारे प्रोसीजर को अंडरगो करें, हम काम से ब्रेक लें, सब कुछ करें. लेकिन ऐसा ना हो कि इनिशियली जो है नाक हमारी ठीक हो जाए लेकिन उसके बाद जो हमारे जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो दोबारा लौट के आए. सो ये सर्जरी परमानेंट है कि नहीं, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन विच आई गेट आस्क्ड. सो आज के इस इंस्टा लाइव सेशन में मैं यही एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि राइनोप्लास्टी के जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट होते हैं. आपके जो चेंजेस आपके नाक में हमने किए हैं सर्जरी के द्वारा, whatever we have done, whether we have removed the hump or we have made the nostrils less wide or we have elevated your nasal bridge, all this is going to be permanent. Having said so, what I again want to emphasize during this session is that the difference between rhinoplasty and other forms of surgery is in the healing time. So suppose you come and get a done surgery like a breast implant from us, or say you get a liposuction done from us. इनके results आपको fairly quickly दिखते हैं. So maybe in a breast implant the results are instantaneous, but if you get a liposuction done again महीने डेढ़ महीने में आपको अच्छे results दिखने लगते हैं. राइनोप्लास्टी में जो पेशेंट को बात समझनी होती है वो ये है कि राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स को आने में थोड़ा सा वक्त लगता है. सो that difference is there between rhinoplasty and other surgeries. So if I do a rhinoplasty, initial जो period होता है of about a month or so, the nose can look very swollen and tip can look very hard. आपको लगेगा कि जो नाक है अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, जो बोन्स का साइज है हल्की सी यहाँ पे आपको स्वेलिंग सी लगेगी. तो ये सब चीज़ें एक इनिशियल आपकी जो राइनोप्लास्टी सर्जरी का हीलिंग पार्ट है. But later on, once the time passes and when you're in say about 6 months or 1 year into your surgery, वो changes ज़्यादा अच्छे से apparent होने लगते हैं. एंड आपको दिखने लगेगा कि जो चेंजेस हैं वो जैसे आपने डिजायर किए थे, जो डिस्कशन आपके साथ हुई थी इन द कंसल्टेशन कि ये चेंजेस आपके नाक में किए जाएंगे, ये चेंजेस पॉसिबल है. यू कैन सी ऑल दैट हैपनिंग एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years आपके जो फाइनल रिजल्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी दिखने लगते हैं. कुछ लोगों में हीलिंग जल्दी भी होती है, जैसे जिनकी थिन स्किन है नाक की, उनकी हीलिंग जल्दी होगी और आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखेंगे. अगेन कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं, जैसे कि अगर हमने आपके नॉस्ट्रल का साइज कम किया तो आपको इंस्टेंटली दिख जाएगा, अगर हमने आपका हम्प निकाला है तो वो इंस्टेंटली दिख जाएगा. कुछ एस्पेक्ट्स जैसे आपकी जो टिप का जो साइज है उसकी स्वेलिंग कम होने में वक्त लगता है, तो उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है टू शो रिजल्ट्स. सो overall, as I said, it takes about 1 year for rhinoplasty results to be fully visible. But once we've achieved this result, this is going to stay with you lifelong. इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, जिसके बारे में भी लोग आजकल इंक्वायर करते हैं. सो लिक्विड राइनोप्लास्टी क्या होती है? लिक्विड राइनोप्लास्टी का मतलब है कि हम आपकी नाक में कुछ चेंजेस कर रहे हैं यूजिंग फिलर्स. तो फिलर्स जो है, जैसे आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट फिलर्स. फिलर्स जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम डालते हैं, बेसिकली हाइलोनिक एसिड, जो हम लिप्स में भी डालते हैं लिप प्लम्पिंग के लिए. कुछ लोग अंडर आई एरिया में डलवाते हैं. उसी तरीके से these fillers can be used on the nose also to create some changes. जैसे कि अगर हमारा ये nasal bridge बहुत फ्लैट है तो उसको उठाने के लिए भी हम लोग फिलर्स यूज कर सकते हैं. या फिर कुछ पेशेंट्स में नाक
की जो टिप है इसको थोड़ा सा पॉइंटेड बनाने के लिए भी फिलर्स यूज किए जाते हैं. सो दिस राइनोप्लास्टी इज कॉल्ड लिक्विड राइनोप्लास्टी. एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं, बिकॉज इसमें फिलर्स यूज किए जा रहे हैं, दीज ऑब्वियसली आर नॉट परमानेंट एंड ये फिलर की लाइफ पे डिपेंड करता है. सो नॉर्मली जो हम नोज में फिलर्स यूज करते हैं उनकी लाइफ जो है तकरीबन तकरीबन 2 साल की होती है. So yes, liquid rhinoplasty is one type of rhinoplasty in which the results are not permanent, and you need to get that again. But in all forms of surgical rhinoplasty जो हमने सर्जरी के द्वारा results achieve किए हैं, they are going to be permanent after the initial healing process. So you will see the changes which have occurred are going to stay with you for life, because जो nose है उसकी जो growth है, maximum growth 18 years तक होती है. In fact 16 years is the time when you can operate upon a patient for doing a rhinoplasty procedure. उसके पहले नाक में बहुत सारे changes आते हैं. That is also the reason that we say that अगर आप if many patients come and tell me कि doctor I want to get a rhinoplasty for my kid. So nose में जो basic changes आते हैं they continue till about 16 to 18 years of age, and that is why जब भी हम rhinoplasty plan करते हैं तो हम इस age के बाद करते हैं. उसके बाद जो आपके nose की shape है, once you in the age group of 16 to 18 years के बाद आपकी जो nose की shape है practically same रहती है थ्रू आउट लाइफ. एंड कुछ एजिंग चेंजेस आते हैं कि जो आपकी जो टिप है वो थोड़ी सी ड्रूप कर जाती है, या थोड़ा सा आपकी जो नोज है वो उस पे लाइंस आ सकती हैं. बट अदर देन दैट मोर और लेस द शेप ऑफ द नोज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ. दैट इज व्हाई अनलाइक अदर सर्जरीज, जैसे कि हम अगर इफ यू डू अ लिपोसक्शन तो उसमें वेट फ्लक्चुएशन से चेंज आ सकता है. अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं तो ब्रेस्ट में भी आपकी जैसे अगर प्रेगनेंसी होती है या ब्रेस्ट फीड करते हो तो ब्रेस्ट के शेप में चेंज आ सकता है इवन आफ्टर एन इम्प्लांट. बट rhinoplasty is one of the surgeries where results are fairly stable and इसमें कोई change नहीं आता है. Another question which I would want to address during this YouTube live session is that about regarding the scars of rhinoplasty. तो ये एक बहुत again कंसर्न रहती है पेशेंट्स में कि जो राइनोप्लास्टी हम करा रहे हैं इसके स्कार्स तो नहीं बचने वाले. सो एंड बहुत पेशेंट्स मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर मेरे को ओपन राइनोप्लास्टी नहीं करानी, मेरे को क्लोज राइनोप्लास्टी करानी है. अब तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये होता है क्लोज राइनोप्लास्टी में सारे जो कट्स हैं वो नाक के अंदर से होते हैं. ओपन राइनोप्लास्टी में एक छोटा सा कट नाक के बेस में आता है. तो ये बेसिकली ऑब्वियसली क्योंकि आप एक ऐसा प्रोसीजर करा रहे हैं जो आपके फेस पे है तो स्कार इज अ बिग कंसर्न. तो ये एक और चीज है जो पेशेंट मुझसे पूछता है कि स्कार्स विजिबल होंगे या नहीं. अगेन आई वांट टू एम्फसाइज दैट व्हेन वी डू अ राइनोप्लास्टी दैट टाइनी कट जो आपके नेजल ये कॉलमिना जिसे हम बोलते हैं इस पे जो कट आता है ये टाइम के साथ बहुत अच्छे से फेड कर जाता है. सो अगेन द स्कार इज नॉट अ कंसर्न and you should not be worried about any kind of visible scar, say maybe in some cases as early as 2 months after rhinoplasty. And practically at the end of 1 year तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई बहुत visible scar है या कुछ ऐसा है जो which is making it very obvious कि आपने rhinoplasty करवाई है. So that is another thing which I want to emphasize कि one, the results are absolutely permanent. ऐसा नहीं है कि you will need to get a further rhinoplasty done to maintain the results. और second, scar जो है वो बिल्कुल नहीं दिखता है even in open rhinoplasty. Closed rhinoplasty में वैसे भी सारा जो incisions होते हैं, सारे जो cuts होते हैं वो नाक के अंदर से होते हैं तो उसमें तो वैसे भी as we all know that no scars are visible. But even in an open rhinoplasty, the जो stitch line होती है that when heals very well with time, and after some point after a period of about 6 months to 1 year the scar is not at all visible. Now कुछ changes ज़रूर आ सकते हैं during the healing process. जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग की नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो उसको हम hump कहते हैं and we remove the hump during the rhinoplasty. But in the healing process sometimes there can be a little bit of swelling in that area and the patient gets concerned कि oh the hump has come back. But what is happening is just that the bone is remodeling itself. उसकी healing process चल रही है जिसमें बीच में थोड़ी सी सूजिश आ सकती है and this will automatically settle on its own. So this is again that is the time when the patient gets worried that oh doctor I got my hump removed but I can see it again. तो ये तो मेरा जो hump है दोबारा grow कर रहा है. So what is actually happening is that it is just the remodeling phase, the time when everything is settling, जिसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है. इवेंचुअली सारी की सारी जो आपकी स्वेलिंग है वो चली जाएगी. द बोन विल रीमॉडल परफेक्टली एंड यू विल नॉट हैव द हम्प.
So even in this case, it's just a temporary phase where you might feel that the result, whatever has been achieved by rhinoplasty, is beginning to fade. And again, in the same bit, what I want to emphasize is that because rhinoplasty results are permanent, you should choose your surgeon wisely. Rhinoplasty is one surgery where expertise makes a lot of a difference, where experience makes a lot of a difference, because it's a very precise surgery. So please don't go for choosing your rhinoplasty surgeon based on the price of the surgery. Obviously, there'll be a range which is being given to you depending on the kind of work which is required. But what you have to remember is rhinoplasty में जो एक बार अगर सर्जरी हो चुकी है तो उसके बाद उस रिजल्ट को मॉडिफाई करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट and in some cases even impossible. That is why, because as I said, the changes are permanent, you have to understand that they should be done right the first time itself, and get it done by a person who's experienced in doing rhinoplasty, because you might well choose your surgeon wisely, have a proper consultation with the doctor before undergoing the procedure as to what your expectations are, and let your doctor tell you that what is possible and what is realistic and what can be actually achieved in your case. Also, it is always better to go for subtle modifications rather than dramatic changes. So ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि किसी और की नाक निकाल के आपके चेहरे पे लगा दी गई है, because that's also very important to understand that every kind of change might not suit your face. So take your doctor's opinion and understand what he or she is trying to tell you in terms of what kind of a nose is going to look good on you. So if you have a very big face, don't ask for a very small nose, because at the end of the day that would not go with the rest of the facial features. So basically, to recapitulate, what I want to say is rhinoplasty results are permanent. It's a one time procedure, and the changes which you achieve are going to stay with you for life. There is going to be an initial period of healing, but after an initial period of, say, about 1.5 years, whatever you have achieved is going to stay with you. So don't, get worried about this fact that you might need to undergo the procedure again. And also, as I said, because the changes are permanent, you should be very sure of what you want, and you should be communicating that very well with your doctor in the pre op consultation as to what are your aims of rhinoplasty, and also take adequate guidance from a plastic surgeon as to whether that change which you want is actually possible, and whether that can be really achieved on your face, and also will it look nice on you. So a proper preoperative consultation ensures a satisfaction at the end of the surgery also, and um, always be informed about how the change is going to look on your face, and an informed decision is the first step in getting a great result in rhinoplasty. So this is more or less about rhinoplasty, and if you have any further queries regarding this particular surgery, please feel free to reach out to us, and we'll be very happy to answer any of your queries. So let's wind up this session today, and I'll be back next week with one such another informative topic. And thanks for joining. Thank you.